Hi guys, this is Somit. Welcome to Somit Academy. As we continue the first chapter, some basic concept in chemistry. So start. As we discussed previous class, the separation method of mixtures and with various methods will be discussed. Then continue and start with distillation. Six distillation. What is this method distillation? Distillation कहले हम कौन बुझा? Distillation होची mixture of two substance ର mixture. One is volatile. Remember, one is volatile. Two mixture and one is volatile can be separated by this method is called distillations. And for example, okay, for example, NaCl can be separated water. NaCl the water mixture. So NaCl can be separated from water by this distillation methods. Next going fractional distillation the fractional distillation. What is it? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन हूँ द मेथड माने जो मिक्सचरटा आमर भैरियस बॉइलिंग पॉइंट फॉर एग्जांपल एवं पेट्रोलियम कौन माने पेट्रोल सब्सटेंस से आमर कौन पेट्रोल डीजेल गैसोलीन भेसलिन एक्सेट्रा तो सब मिसी कौन पेट्रोलियम तो पेट्रोलियम हूँ जे ताकू आम जो टेम्परेचर दबा पेट्रोलियम रे भैरियस टेम्परेचर माने एमानकर बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंट तो कहार अधिक कहार कम तो टेम्परेचर अनुसार एमाने जनक पर जन सेपरेशन हम दिस प्रोसेस इज नोन ऑफ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन. ओके 8 steam distillation. What is steam distillation? Steam distillation कहला कि it is used to separate liquid from a mixture by heating with steam. हमें steam द्वारा by steam heating जो लिक्विड की हमें सेपरेट करिया कंडीशन इमिसिबल लिक्विड हेथियो इमिसिबल सब्सटेंस जोटा हमें मिसि पानथियो इमिसिबल सब्सटेंस हेथियो. गाइस क्लियर. नेक्स्ट हम देखिबा मेकानिकल सेपरेशन. मेकानिकल सेपरेशन कौन कहला? Two immiscible liquid can be separated by using separate funnel. Funnel माने for example दे दोचे oil and water can be separated by using funnel and the process is known as mechanical separation. Magnetic separation. Next, magnetic separation. What is magnetic separation? If two solid, one of which is magnetic substance, दीटा solid मानकर दीटा solid मिसी छंती mixture है दीटा solid मिसी mixture है one of them is magnetic character. So you can easily using by magnet to separate one of them, and this is not a magnetic separation. 11 of atomolysis. What is atomolysis? In this process, a mixture of gases can be separated based on the rates of diffusion. Rates of it can be separated by using rate of diffusion. What is diffusion? Intermix completely in air. Diffusion होउची intermix completely in air.
completely completely in air. तो एयर आम जो इंटरमिक्सटा कहे आम डिफ्यूजन तो गला जदि आम रेट ऑफ डिफ्यूजन अनुसार डिवाइड कर ये प्रोसेसटा को हम एटोमेलिसिस कह जाए। तो क्रोमाटोग्राफी एग्जांपल हो आइसोटोप ऑफ यूरानियम ये एग्जांपल लिखिद गोटे आइसोटोप ऑफ यूरानियम U235 एंड U238 तो आमको ये 38 सेपरेट एटोमेलिसिस देन गो टू ओके तापर क्रोमाटोग्राफी guys, this is the method which can be used in all methods, solid as well as liquid as well as gas. In three format we can use chromatography. What is chromatography? In this method the component of mixture can absorb माने component of mixture तो mixture गोटे component absorb करना हो absorb on a suitable absorbent at different rate on this separate तो गोटे suitable absorbent रे absorb करना को component absorb कर दो so all are separated, all are being separated. Okay guys, this is the all about dual method of process in which a mixture can be separated or separate mixture will be separated. Next is atom. What is atom? Atom is the smallest particle of an element which does not always exist independently. तो atom कहला कि smallest particle of an element which does not have independent existence. आटम हूँ सबुठ छोट एलिमेंट सब छोट पार्टिकल जार कि इंडिपेंडेंट एक्जिस्टेंस सॉरी डू नॉट हैव इंडिपेंडेंट एक्जिस्टेंस से अन्य पे डिपेंड से केवल एकुटिया माने सिंगल हो पारे तो आटम सब पेयर ही रुहे फॉर एग्जांपल atoms of hydrogen do not exist independently but instead always occur in pair. Hydrogen atom example hydrogen atom H so it does not exist and it always H2. Okay. Next atomicity. What is atomicity? It is the number of atoms present in the molecule of an element. से कहला कि गोटे molecule number कहूँ number of atoms present in a molecule. गोटे molecule एटा होची कोन हमर molecule गोटे molecule रे केतोटी atom अछंती से प्रोसेस टा हमर होची atomicity. गाइस क्लियर एटॉमिसिटी कौन कहबा नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन ए मॉलिक्यूल गोटे मॉलिक्यूल रे केतेटा हमर एटम अछंती फॉर एग्जांपल क्लोरीन Cl2 क्लोरीन हम दुईटा एटम अछंती ओजोन O3 ओजोन रे तीनटी एटम अछंती एक्सेट्रा. एटॉमिक वेट का कहबा एटॉमिक वेट atomic weight or atomic mass. Atomic mass हमें क्या कहूँगा तो atomic mass of a substance element is the number of times its atom is heavier than 1/12 of the mass of carbon. तो गोटे atom रो mass number और weight टा केते heavier ये number of times heavier
then 1/12 of the mass of carbon. से कहला कि गोटे आटमर मास कि वेटटा आटमिक वेट आटमिक मास आम क्या जो आटमर मास कि वेटटा नंबर ऑफ टाइम्स हेवियर केते टाइम हेवियर देन 1/12 ऑफ द मास ऑफ कार्बन कार्बन 1/12 मास टू केते हमर हेवियर सेटा होचे हमर आटमिक वेट आटमिक मास atomic weight or mass equal to average weight of an atom or element. Average weight of an atom of the element divided by weight of an atom of C12 into 12 okay, clear? For example, atomic mass of some common atomic mass of some common element. Example, hydrogen 1, helium 4, carbon 12, oxygen 16, nitrogen 14, sodium 23, phosphorus 31, sulfur 32, potassium 39, iron 56, copper 64, zinc 65, uranium 238. Atomic weight. तो atomic weight atomic mass वाला तापर आसला molecular weight. molecular weight हमें क्या कहबा? molecular weight the molecular weight of an element compound number of times okay এইটা ছিল আমার atomic weight বা atomic mass এইটা হচ্ছে molecular weight বা molecular mass. molecular weight of an element or compound is the number of times of the molecule of its molecule heavier than 1/12 mass of carbon atom. देखो आमर molecular mass और atomic weight माने ता heavier than 1/12 of carbon atom atomic weight molecular weight of এটা atomic weight of थिला molecular weight এটা difference अते molecular weight of element or compound equal to element of compound divided by weight of one atom of C12 into 12. Okay guys, तापर मोल देखिए मोल कौन मोल होची 1 mole is equal to number of atoms present by 12 grams of C12 12 ग्राम of C12 रे जेते की नंबर ऑफ एटम्स अछंती ताको हमें 1 मोल कहबा ताको हम कोन कहबा 1 मोल कहबा तो here 1 mole is equal to 6.022 into 10 to the power 23 AMU atomic mass unit
तो यहाँ आमर कौन एवोगाड्रोस नंबर, it is Avogadro's number 6.022 into 10/23. Relation of between gram and mu 1 gram equal to 6.022 into 10/23 AMU. Remember. Okay, next equivalent weight. Equivalent weight कौन कहला? It is the number of parts of substance by weight which combine with the displaced directly or indirectly 1.0 part of weight of hydrogen or 8 parts of oxygen or 33 point. देखो से कहला कि number of parts of substance, number of part of substance, number of parts of substance which combine or displace कहा सहित 1.008 parts of hydrogen or 8 parts of oxygen or 35 point parts of weight of Cl2 Cl chlorine. Okay guys, the physical and chemical changes. तो हम देखिए कौन चेंजेस हो फिजिकल एंड फिजिकल चेंज हो फिजिकल चेंज ऑफ स्टेट ओनली नॉट ओके आम फिजिकल चेंज कर देख फिजिकल चेंज में कौन जोटा आम देखिपुर फिजिकल माने गोटे गछ अच्छी तो गछ बड़ हो गला इट इज फिजिकल चेंज जोटा आम मैंने सीन कर जानीपे गछ बड़ है बोली मैंने बाह्यतम माने आकृति साइज रे चेंज है फॉर एग्जांपल तो एग्जांपल कौन कहले मेल्टिंग ऑफ आइस मैग्नेटिंग ऑफ नेडल मैग्नेटाइजिंग ऑफ नेडल जोटा आम देखिपुर फिजिकल चेंज केमिकल चेंज chemical change as due to new substance having composition and properties together different तो गोटे जिनस थिला चेंज हो किंतु ता भीतर इनसाइड रे ता कंपोजिशन चेंज हो एटा गोटे हमर कोन थिला मिक्सचर भी एलिमेंट जहाँ भी थाउ सब्सटेंस लाइट सब्सटेंस तार आम कंपोजिशन जदि चेंज होची किंतु साइज रे चेंज होनी कंपोजिशन चेंज हो तो यहाँ आम केमिकल चेंजेस गाइस क्लियर ओके तापर आम एम्पिरिकल फॉर्मूला एम्पिरिकल फॉर्मूला में कौन देखा द एम्पिरिकल फॉर्मूला गिव्स द सिंपल रेशियो नंबर ऑफ रेशियो बिटवीन द नंबर ऑफ एटम्स एंड डिफरेंट एलिमेंट्स फॉर्मिंग कंपाउंड H2O एग्जाम H2O टेल्स दैट देयर आर ट्वाइस आम देख आम गोटे कंपाउंड H2O अच्छी H2O जाना जे दुईटा हाइड्रोजन एटम प्लस 1 ऑक्सीजन एटम तो जो प्रोसेस जो फॉर्मूला आम जानी दे गोटे कंपाउंड केतेटा एटम मिसी तो यहाँ हूँ आम एम्पिरिकल फॉर्मूला मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कौन कहला मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कौन जस्ट H2O2 यहाँ हूँ तार मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कौन हाइड्रोजन पेरोक्साइड Cl2 मॉलिक्यूलर फॉर्मूला M2 मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कॉलर्स कौन से कॉलर्स इट मे बी क्रिस्टालाइन और देखो इट मे बी क्रिस्टालाइन और नॉन क्रिस्टालाइन हो पारे नॉन क्रिस्टालाइन हो पार जोटा आम लिक्विड अर्थ तरल अवस्था जोटा कहते आम यहाँ कलर्स कहते केतटा प्रकार अच्छी देखु सॉल गोटे सोल है सॉलिड इन लिक्विड कौन सॉलिड इन लिक्विड यहाँ हूँ आम सॉल कह सॉलिड इन लिक्विड सेटल ओके तापर जेल
जेल कहूँ लिक्विड कंटेन्स कॉइलॉइड सॉलिड, लिक्विड कंटेन्स कॉइलॉइडल सॉलिड है जेल लिक्विड इन सॉल्यूशन इन सॉलिड इन लिक्विड, सॉलिड इन लिक्विड जेल लिक्विड कंटेन्स कॉइलॉइडल सॉलिड एंड एरोसोल, एरोसोल कहला देखो ये आम कौन देखा आइदर liquid is dispersed into either solid or liquid in a gas, either solid or liquid in a gas आटा सपोज आटा हो यार either solid or liquid in gas, এইট দেখুন এরোসল আইদর সলিড ইন লিকুইড ইন গ্যাস এটা হচ্ছে এরোসল। তো সলিড্রে মিশিলে আমি କ'ଣ କହିବା ଆଉ ଲିକ୍ୱିଡ଼୍ରେ ମିଶିଲେ କ'ଣ କହିବା, ସଲିଡ୍ ପ୍ଲସ୍ ଗ୍ୟାସ୍ ମିଶିଲେ ଆମେ କ'ଣ କହିବା ସ୍ମୋକ୍, ଲିକ୍ୱିଡ଼ ପ୍ଲସ୍ ଗ୍ୟାସ୍ ମିଶିଲେ ଆମେ ତାକୁ କହିବା ଫଗ୍। प्रॉपर्टीज हम देखा प्रॉपर्टीज ऑफ कॉलॉइड, कौन देखिए when the beam of light is passed through a true solution the path of beam is not visible when it pass through solution गोटे beam of light अच्छे यहाँ कौन आम beam of light से कहूँ beam of light जो true solution এটা হচ্ছে ট্রু সলিউশন, বিম অফ লাইট যেতলে ট্রু সলিউশন পাস করব দ ইজ নট ভিজিবল কমপ্লিট when beam of light passes through true solution it is not visible but when it pass through a sol মানে solid in liquid sol সেই মানে সেই beam of light যেতলে গোটে sol क्रॉस करिवो तो आमे कोन देखिबा it is visible कर दो जाओ थरे this is known as Tyndall effect। when a beam of light passes through a true solution it is not visible and when beam of light passes through a solid in liquid it is colloid then it is visible, so this process is known as Tyndall effect। what is Tyndall effect? This is Tyndall effect। okay, next metallurgy। okay, next metallurgy। what is metallurgy? it compresses the various process involved in the production of metal from ore गोटे हूँ ओर यहाँ हूँ ओर मान कंचामाल ओर जो आम मेटाल पाइबा से प्रोसेसटा हूँ आमर मेटालर्जी। मेटालर्जी हूँ द प्रोसेस फ्रॉम व्हिच ए मेटल कैन बी फॉर्म फ्रॉम ओर हाँ तापर ओरटा रॉकी मेटालटा मटेरियल और गॉस मटेरियल्स और मैट्रिक्स। rusting को it is caused an iron due to presence of moisture। rusting how it is caused due to presence of in iron due to presence of moisture oxygen and carbon dioxide in air। rusting is the prevented by surface coating with filling of air, paint and metal coating such as chromium coating। one example chromium coating, nickel plating और copper plating। alloy कौन इटा मिक्सचर टू और मोर मेटाल जिते मेटाल मिसे टू और मोर मेटाल्स दुई रु कि अधिक मेटाल्स मिसी गले
स्मॉल अमाउंट ऑफ नॉन मेटल्स नॉन मेटाल मिसले किसी अस ना सम अमाउंट ऑफ नॉन मेटल्स अल्सो तो यहाँ गोटे फॉर्म करें कौन आलॉय मिश्र धातु मेटाल मेटाल और नॉन मेटाल मिसिगले कि टू और मोर देन मेटल्स और सम अमाउंट ऑफ नॉन मेटल्स असुविधा ना नॉन मेटल इट इज नोन एज आलॉय और तो मिनरल फ्रॉम व्हिच मेटल्स आर प्रोड्यूस ओरटा जो आम मेटाल पाइबा ये कहते जो मेटाल आम मिले यहाँ हूँ ओर कंचामाल जोटा आमर कंचामाल मिनरल्स मिनरल्स कौन कहवा मिनरल्स क्या कहवा दीज आर द नेचुरल एलिमेंट्स यहाँ हूँ नेचुरल एलिमेंट्स natural material natural means from the earth that form something form through geological process तो mo geological process रे natural process रे हमें minerals पाता thousands of forms simple of salt minerals we find we get. Okay guys, thank you for watching and next class next video.